All right, Assalamualaikum everyone, it's Shoayb Khan and welcome to the live update of Crypto Affairs, live morning update of Crypto Affairs. It's 6th of January 2023 and a lot of been happening as per the fundamentally when it comes to the Bitcoin. So we're gonna have a look here, what's just happened and are we still gonna be range bound and all that kind of stuff. So let's get started. Before we do, just to let you know that we're gonna be doing the first segment of it in English for our wider audience, and then we're gonna be coming towards the usual Urdu updates. All right. So before we start, again, just to let you know that I'm not tagging anyone. So whenever whoever wakes up at whatever time they're gonna be watching this video is gonna be recorded and put on Facebook. So yeah, here it is. Here's our mighty BTC, and this is the setup that we have been looking for. And I've been telling you guys a day before yesterday, and unfortunately, my live feed was interrupted by some, YouTube RTM, some kind of stuff that was happening. So the thing is that I was saying a day of before yesterday that uh, we are going to be range bound again in these 16,800 levels because we didn't like pick up enough liquidity from down there at 16,340, and right now the same thing is happening at this time. So how long are we gonna be there? The thing is that if we just look at this scenario, if I'm gonna pull this from current support to the HTF PY, we are literally to the dollar value sitting in the middle. The liquidity from the upside is at 7,360, and from the downside it's at 16,270, and now we are being deliberately held up there so that retailers can be pushed, and one side has been been accumulated and retailers will be washed in this process. So at this time, at this very hour, I'm gonna just say this, that there are more confluences like on the downside instead of upside, and any move upside will be really temporary. Like if the BTC go like this, well, that's gonna be just for the liquidity grabbing, because ultimately it needs to come back down, and I'm gonna show you in a minute why I say this, what I'm saying. So this is what's happening at the moment. All right. So in couple of hours, I think in like 5 or 6 hours, the job data is coming out. So expect some volatility will be there, and I really don't care how the news will gonna be turned out, but I believe if we have to grab the liquidity from the upside, it's more likely be a good news in terms of the job data. So hopefully it will be providing the liquidity, because a lot of people been shorting at this time, and I hope they'll be I can see they'll be washed away in that minute or hour, you can say. So it's just a petty move of like $300 $400, but since we are really range bound since couple of weeks and this entire month of November, December, and in this current January, a little move to the upside or the downside feels a really huge pump or dump. So I wish, if it's going to be play that way, I hope that we tap the 17 360 levels first, and then from there we're going to be opening our shots towards the downside from 16,270 to 16,340, and then we'll be going up towards 7,700 or 18,300 level to fill that deformities in PA that's been placed there. So this is what's happening. So now a lot of people have been asking me why I say the 17,360 will be tapped and all that kind of stuff. So I'm just gonna show you right here why I say this. I'm gonna switch to the daily chart. It's a really simple setup. It's a really simple setup, and you can see here, if that's your top and that's your bottom, so this is what's happening. This is not first, this is not tap yet, but the price tend to reach towards that point. All right, so this is actually the 18,369, the
PA deformity that I was talking about a minute ago. And if you do the same here, just consider your top here and you consider your bottom here, and you can see this is your 17,327 on the index, but on like on the perpetual charts and all the other exchanges, it will be around 360 to 400, 17,400 level. So I think it will be pretty much gonna be play out here, and right at this point, and then it will be all good to go from the downside, finishing this setup, right? And then if we will be out, reaching towards this level at 18,300, 18,500 level, well, it's gonna be for sure making the new lows if you're gonna come back down, because the energy is pretty much depleted. I don't think the BTC got enough fuel at this point, at this very hour, to fill these gaps. So this is the range basically we are playing in. So this is pretty much kind of a plan that I'm building my longs or shorts, whatever, in this region. And the other thing is that a very obvious thing is, if you look at the yearly chart here, yearly chart here on the index, you can see there's no bottom at this point. So the price just started from 16,529 and then it went up, stayed sideways. So it needs to be coming back down here, and it's pretty much obvious why it should be coming down. All right, so this is the second reason, and I'm also gonna give you the third reason in this scenario, which is if you look at the session breaks, and I'm gonna go back towards the Monday here. All right, so this is our Monday low, this is our Monday high, and you can see we tested the Monday highs. This was our Monday high. We pretty much went sideways in Tuesday. We tested the Monday high on Wednesday again, and then we stayed above the Monday high on Thursday, yesterday, and now Friday coming up, and the things are pretty much looking a bearish here. So there's a high chance that we might touch that and also reclaim the Monday lows sooner or later, because this Monday low is being untapped, which is also kind of a bottom of this year start. So it's pretty obvious that the confluences are pointing downwards more than as compared to the upside. So this is just the scenario that's what's happening, and it's really simple, really easy to understand. Hope you guys won't be confused in that scenario where the market is headed, because this is what we do, and this is why our motto stands for: don't let the market surprise you. All right, so basically this is the major update, and onto my charts. I'm pretty much confident about how I'm gonna open my position and from where I'll be looking at my positions to be considered in this scenario. Secondly, if you have any queries, you can go ahead and ask me, and we're gonna have a discussion there. All right, जब तक जो है एक my sore is still throat. Oh man, what I'm saying. अच्छा, एक कुछ एनालिसिस जो है अभी इसमें पोस्ट मैंने करे थे, सो इस पे भी एक नज़र मार लेते हैं. ईथर का एक सिनेरियो था, एक सिंपल सा बीटीसी का सिनेरियो जो है मैंने दिखाया था कि ये लिक्विडिटी प्रोफाइल्स कुछ हैं जो अभी अनटैप्ड हैं. सो बीटीसी विल बी कमिंग बैक हेयर, एंड दिस इज़ द फोर्थ कॉन्फ्लुएंस in that scenario why the price should be coming down ultimately sooner or later. So एक 16,541 पे एक लिक्विडिटी प्रोफाइल है, एंड दूसरी जो है वो 16,488 पे. तो these will be filled sooner or later. I'm pretty much confident about it. लिक्विडिटी प्रोफाइल का जिसको नहीं पता क्या है, दे कैन गो बैक एंड चेक. जिस चैनल पे भी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे मैंने इसको पोस्ट किया हुआ है, सो यू कैन सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर. अच्छा, दूसरा BNB पे एक सेम सिचुएशन थी. डोंट टेल मी दैट आई डिलीटेड दैट. आई थिंक इट वाज ऑन परपेचुअल. Yes, there's an MBP, untapped MBP at 244. So BNB will be reaching that situation here again. Third जो था वो था लिंक का.
लिंक में भी हमें एक अनटैप एमबीपी है इसमें, सो इसको भी इसने आके टैप करना है 5.508 पे. आई हैव माई ऑर्डर सेट इन देयर for the long ones. I'm not shorting, and you can see pretty much how it's been playing out. I think I posted it yesterday on my Twitter. Fifth one was on the Atom. Atom has its एक जो है इसकी काफ़ी करंट वीक एक रेजिस्टेंस इसकी थी, एंड देन इट जस्ट शॉट अप राइट देयर. एंड अभी इम्बैलेंस एक अभी इसका मौजूद है, और एक जो इसकी एन पी ओ सी है तो वो भी इसने यहाँ पे बनाई हुई है. एंड इस ईयर के स्टार्ट में यू कैन सी हाउ इट शॉट अप, सो इट्स गोना बी कमिंग बैक डाउन देयर फॉर श्योर. एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस वाई इट शुड बी डूइंग दैट, बिकॉज देयर इज़ नो वॉल्यूम हेयर. सो यहाँ पे इसकी कोई सपोर्ट नहीं है 9 के रीजन में. जो एन पी ओ सी इसकी आ रही है वो 9.345 पे ही आ रही है. सो this is what's happening with this. All right. अच्छा जी, a lot of people are minting in mentoring launch. अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो इतने समझ चुके होते हैं उस पर सारी चीज़ों को लेके कि अब जो है ना थोड़ा मतलब ज़्यादातर लोगों को जिनको 2 या 3 महीने हो चुके हैं या मोर देन दैट, तो उनको जो है अभी हैंड होल्डिंग इतनी नहीं करनी पड़ती कि ओके दिस इज़ द सेटअप, यू हैव टू मैनेज द रिस्क एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ. एंड दिस इज़ व्हाट माई ड्रीम इज़ टू सी दैट काइंड ऑफ ट्रेडर्स एंड यू नो एनालिस्ट एक पाकिस्तान में मतलब ये के सामने आते हुए दे जस्ट लुक एट द चार्ट्स एंड दे नो what to do and how to do it, and how they should manage their risk and all that kind of stuff. So it's really surreal to see. The other thing is that while you're typing your updates and all that, ether की मैंने अपडेट दे दी आपको. परपेचुअल पे नहीं दी मैंने, सॉरी. ईथर की अपडेट जो है वो सेम लिक्विडिटी प्रोफाइल है 1203 पे, 1203, 1191 पे. इट विल गोना बी फुलफिल्ड सून. सो इफ़ यू आर शॉर्टिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बी अवेयर. एक वीक ऊपर अभी शॉर्ट्स को उड़ाने के लिए हो सकती है बिकॉज जॉब डेटा जा रहा है ईटी टाइम सुबह 8:30 बजे. सो यू कैन सी पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से वो क्या सिचुएशन बनेगी. आई थिंक इट विल बी अराउंड I'm gonna be post वो UTC के टाइम से मुझे पता है, मुझे ET के टाइम से थोड़ी कन्फ्यूजन होती है. सो I'm gonna check the पाकिस्तानी टाइम, बट वो होपफुली जुम्मे की नमाज़ के बाद ही जो है वो आएगा. तो देयर विल बी सम वॉलेटिलिटी. आई रियली होप वी रीच द अपसाइड फर्स्ट एंड देन गो अहेड एंड सी के उसके बाद जो है उसकी सिचुएशन क्या होती है. तो ये इसकी सिचुएशन एक बनती हुई जा रही है. तो 1203 is your link, oh sorry, ether point liquidation profile, liquidity profile, and 1191. all right. अच्छा जी, उसके बाद XRP मेरी करंट सपोर्ट से बाउंस हुआ है, एंड देन आई रियली विश कि ये ग्लोबल सपोर्ट से पिक कर लेता मेरा ऑर्डर, लेकिन ये आया नहीं यहाँ पे, विच इज़ एट 29.36 cents. So it was a really good move because I had a really big order from there. तो ये एक मुझे अच्छी एक मूव यहाँ पे दे देता तकरीबन 22% की एक ही झटके में, बट अनफॉर्चुनेटली वी प्रीटी मच मिस दैट. तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है इस पर, मैं आल्ट कॉइन्स को इतना देख नहीं रहा होता. लेकिन इफ़ वी कंसिडर द सिचुएशन हियर, आई थिंक इट विल गोना बी कमिंग बैक एंड फिलिंग दिस विक partially at 31 cents. So we'll gonna see how it will gonna be turned around. All right. यार माइक असल में इतना सेंसिटिव है. व्हाट एज शुड आई डू. मैं अभी थोड़ा मुझे वायरल वगैरह हुआ होता है, एंड आई एम रियली फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू टॉक एंड ब्रीथ लाइक द वे आई यूज़ टू. सो सांस जो है ना उसमें फूल रही होती है जब आप बात कर रहे हो. तो आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, बट it is what it is. I wish if I could suppress my breathing sound, but unfortunately I'm not able to do that. Hopefully in maybe शायद दूसरे जन्म में जब मैं मछली होऊंगा तो शायद मैं ये कर सकूं. So जब तक आप जो है थोड़ा बर्दाश्त कर लें इसको. ओशन का एनालिसिस. uh, 1821329. What? आपका जो टीपी है ना वो आप बुक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्राइस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेच काफ़ी हो चुकी है ओशन की, एंड यू आर इन गुड प्रॉफिट. सो बेटर टू अचीव बुक दैट. 182 आपने किया ना यहाँ से लॉन्ग,
तो आप ऑलरेडी 2.3 2.4% प्रॉफिट में, बिकॉज इट्स मेकिंग a harmonic here and it will be coming back down at 16-17 लेवल. तो ये आप बुक कर लें यहाँ पे. सॉरी, ये एक हार्मोनिक इधर क्रिएट करा है तो ये वापस इधर आएगा. आपकी एंट्री इधर है तो ये यहाँ पे बुक कर लें. प्राइस जो है काफ़ी इसकी स्ट्रेच हुई है तो इट्स बेटर टू पे योर सेल्फ. वेट नहीं क्या करेंगे, टीपी क्या होना चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए. अभी बेयर मार्केट में जहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है जस्ट बुक इट एंड डम द कॉइन एंड ऑल दैट. कॉइन से मोहब्बत नहीं करनी हमने. अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़. जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का एहसान है. आई एम जस्ट हैविंग अ रियली sore throat, so apologies for that if I sound like a really weird guy. All right. What else do we have here? What else do we have here? अच्छा जी, डोमिनेंस की भी एक बात कर लेते हैं जब बात चली रही है. तो डोमिनेंस ने काफ़ी पीटीसी डोमिनेंस ने काफ़ी एक ब्रेक डाउन यहाँ पे किया है, लेकिन हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रीच नहीं हुई. यू कैन सी 1.68% यहाँ पे गिरी है एंड इट्स मेकिंग अ बेयरिश रीटेस्ट हियर काइंड लाइक दिस. तो we'll be looking at that. अच्छा जी, मैटिक यूएसडीटी. मैटिक आपका अंडर रेंज अभी चल रहा है. लास्ट एनालिसिस मैंने यहाँ इसका किया था इम्बैलेंस का, वो इसका फिल हो चुका है. सो आई एम गोना बी रिमूविंग दिस प्रीवियस EQ हाइज हेयर. ऑलराइट, क्योंकि ये टेस्ट हो चुके हैं. और मैटिक अभी एक सेकंड में ज़रा इसको डेली चार्ट पे देख लूँ. आपके इंतज़ार का शुक्रिया. Are you guys seeing any, by the way, upgrade in quality in this live, session? Please let me know. Or, switch to 16 FPS 1080p. I was just kind of, tweaking a lot of stuff. So do let me know if you are really seeing some visible raise in quality, apart from my voice. अच्छा, मैटिक की जो सपोर्ट आपकी आ रही है, करंट सपोर्ट अभी है 7.7570 पे. 7570 पे. बट एक सेकंड मैं इस पे देख लेता हूँ सपोर्ट. अगर मैं इसको ज़रा सा ट्वीक करूँ तो इट विल बी एट अराउंड 7536. यहाँ से गई, ये इसने वो किया, देन अप करके यस 75 सेंट्स पे जो इसकी सपोर्ट अभी है बेसिकली. तो ये भी थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे लेगा, लेकिन अभी इसने हायर हाइज ही बनाए हुए हैं. तो इसने हम ये MSB जो है बुलिश, जो इसका MSB चल रहा है वो उस पर वो कंटिन्यू कर रहा है. अगर ये यहाँ से नीचे क्लोज कर लेता है इस पॉइंट से तो इट विल बी कमिंग बैक टुवर्ड्स द करंट सपोर्ट, लेकिन अभी ऐसे इसकी सिचुएशन नहीं है. सो इट्स काइंड ऑफ बुलिश इन दिस चार्ट. साइडवेज थोड़ा चलेगा. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद मैटिक. DYDX going to make upward rally here. DYDX USDT. सेम सिनेरियो इधर भी है, बुलिश इसकी कंटिन्यूशन है. इसने स्ट्रक्चर तो अभी ब्रेक किया है अपना. तो ये जब वापस नीचे आएगा तो ये आएगा तकरीबन 1.085 पे एंड देन इट विल गोना कंटिन्यू अपवर्ड्स. ठीक है, रैली हो सकती है क्योंकि ये ब्लीडिंग इसकी काफ़ी हो चुकी है यहाँ से. हम तकरीबन इसको मिड ऑफ नवंबर से देखते हुए आ रहे हैं. तो ये है, लेकिन वी हैव टू आल्सो चेक हाउ द डॉलर इज़ रिफ्लेक्टिंग हेयर. डॉलर ने भी रैली ऊपर पकड़ी है, सो दैट मीन्स इट विल बी काइंड ऑफ अ करेक्शन हेयर एट दिस पॉइंट. लेट मी स्विच टू 30-minute chart here. So dollar will be correcting this position, which will give the BTC the push towards 17,300-400 की रेंज में डॉलर के यहाँ आने की वजह से. एंड देन जब ये ऊपर की तरफ जाएगा इट विल गोना मेक द अदर मार्केट्स प्रीटी मच ब्लीड इन दैट सिनेरियो.
All right, so I guess that's all about it. Do let me know if there's any query. I hope you are enjoying the videos of price action series. I'll be posting the new lecture soon. अब जो इसमें आएगा वो वॉल्यूमेट्रिक वाइड जोन्स का आएगा एंड बिगिनर वाली जो चीज़ थी वो हम इसको कवर कर चुके थे. अब इंटरमीडिएट है, एडवांस है एंड देन एक्सपर्ट्स लेवल पे हम बात करेंगे. तो this is what's happening with a lot of stuff with mentoring launch. And secondly, if you're not in mentoring launch, do come here because this is the point where we'll be looking at making some generational wealth, because we'll be observing most likely जो 2023 का एक जो हमारा बेरिश पीरियड चलेगा, एक साइडवेज और एक जो हम बॉटम्स इसको कैच करने की कोशिश करेंगे. सो डोंट वेस्ट इट बिकॉज इट विल going to be the last time we're going to be seeing these prices in our coming 10 to 15 years. All right, so I'll be seeing you in mentoring launch or Facebook or YouTube. जो भी सारी चीज़ें हैं, do let me know. And जैसा भी होता है बाकी I'll be updating you regardless of wherever the market will turn out. और दूसरा ये कि मैं इसकी अभी पोस्ट कर देता हूँ कि टाइमिंग इसकी क्या है जॉब डेटा आने की. हालांकि इतना कोई वो आना नहीं है क्योंकि FOMC की कोई ऐसी मीटिंग नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें स्नैरियो जो है ऐसा कोई देखने का मिले बुलिश या बेरिश. बट एक तरफ अगर हो जाए, हम ऑर्डर्स वगैरह अगर पुल हो जाते हैं ऊपर से शॉर्ट के, सो दैट विल बी मच बेटर टू carry on our shorts position. So this is all about it. I hope आप लोगों ने जो है इससे काफ़ी चीज़ें देख ली होंगी, समझ ली होंगी. PTC की अपडेट pretty much क्लियर है. शुरू में जाके देख लीजिएगा जो भी उसका सिनेरियो है. एंड लाइक आई ऑलवेज सेज, मंजन फरोशों से ज़रा दूर रहें बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑल गुड, नथिंग सरप्राइजिंग गोइंग ऑन. अगर कोई मंजन फरोश आपका परेशान है, चीख रहा है, बड़े बड़े मुंह खोल के थंबनेल लगा रहा है वीडियो के, दैट मीन्स ही डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट द मार्केट एंड he's pretty much feeding off you. So don't let the market surprise you. Stay happy and enjoy weekend with your family. Thank you so much. I'll be seeing you guys. Allah Hafiz.